ओके मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके तो फिर कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन सभी, ऑल ऑफ यू। रोल नंबर 35, 14, 13 तुम भी कैमरा ऑन करो, सभी कैमरा ऑन करो, अटेंडेंस चाहिए। तो कितने आए अभी तक? 20। कैमरा ऑन सभी का। ये क्या तुम बहुत सारे वो ऑन करके वो कैमरा फोन ऐसे ही रख के फिर चले जाते हो कहीं? लास्ट टाइम मैंने देखा था, बीच में मैंने पूछा था तो वहां कोई था ही नहीं, सिर्फ 10-12 बच्चे थे। तो तुम उस दिन तो एब्सेंट लगोगे ही, लेकिन अब मुझे शक हो जाएगा ना कि तुम प्रेजेंट नहीं होते हो। ये कौन म्यूजिक सुन रहा है? ओके लेट अस स्टार्ट। बाकी भी अपना कैमरा ऑन रखो, शुरुआत में सभी कैमरा ऑन किया करो क्योंकि ये जरूरी है, हर बार बोलना पड़े। सो लेट अस स्टार्ट। मैं व्हाइट बोर्ड शुरू करता हूँ। ओके लास्ट टाइम हमने कहा था कि Cx is a separable space। हमने प्रूव किया था Cx is separable if X is a compact metric space. Compact metric space. और by Cx we meant, Cx से हमारा मतलब था which was all functions from x to r such that f is continuous। और चूंकि x compact है, तो every continuous function on a compact set is, you know, अगर वो real valued है तो its range would be a closed bounded interval। So that means that the norm, if I define the norm f infinity to be supremum of x belongs to x such that of the mod x, this makes sense because इसकी जो range होगी वो bounded होगी because x is compact। So हमने दिखा दिया this is a separable space अगर x compact metric space है। metric दोनों ही चीजें important है। So a special case जो होगा, जो हम करते हैं, शायद तुमने किया होगा कि C01 is separable। इसके लिए हम अलग से प्रूव भी कर सकते हैं, but it follows from it rather the two things are equivalent, I think, because we can prove that Cx is compact by using that C01 is compact, and other way is also true. Anyways, so okay, now we prove something, that any separable Banach space can be, embedded inside C01. So that's our next theorem। C01 जैसे तुम्हारे सिलेबस में लिखा है as an universal separable Banach space। Banach space जो हमारा थ्योरम होगा इसके रिगार्डिंग, तो given a separable Banach space X, given a separable
Banach space X, separable. That is a countable 10 set. There exists a linear isometry. There exists a linear isometry T from X into C01. We can embed it inside C01 as a subspace. तो इसका proof अब easy है क्योंकि जो हमने पिछला वाला theorem किया था. Now let's consider this X star. Now by Banach-Alaoglu theorem, what we want to say, we want to use this theorem. Banach-Alaoglu theorem जो हमने किया था पहले या दूसरे यूनिट में. Bx star अगर मैं लेता हूँ x star की यूनिट बॉल, it would is weak star compact. ये हमेशा होता है. It is compact under weak star topology. और उसी की एक्चुअली हमने की थी, मैं डायरेक्ट लिख सकता था, हमने क्योंकि वो की थी वो कॉन्सिक्वेंसेस. वीक स्टार कॉम्पैक्ट मेट्रिक, हाँ मैं सीधे लिखता हूँ वीक स्टार कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस. हमने किया था वो थ्योरम, अगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, Bx स्टार जो है इज separable if and only if, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने गलत लिखा, is metrizable if and only if X is separable. You can, if and only if X is separable. ये हमने किया था एक्चुअली एज अ थ्योरम. उसका मतलब क्योंकि X separable है और Bx star is always, ये तो metric space है, it arises out of a metric space. So और ये compact भी है. So कहने का मतलब usually जो weak and weak star topology है वो metrizable नहीं होती, मतलब, but here we are restricting it to a bounded set. तो bounded set में restrict करने से उसमें possible है it could be a metric space that it arises out of a metric. So next step is, so अब अगर ये है, it's a compact metric space under weak, or I say Bx star is a compact metric space under weak star topology. यानी इसकी जो weak star topology है, it arises, वो जो open sets हैं, they arise out of some metric. So अगर ये compact metric space है, then we know that, so there exists a continuous, जो हमने इससे पहले किया था एक theorem, there exists a continuous surjection. I mean, it must be the continuous image of the Cantor set. There exists a continuous surjection. There existence there exists a continuous surjection, a continuous map that is surjective in an onto surjection. Let's call that rho from Cantor set onto Bx star. Of course, we have to think Bx star be weak star topology, only then it is metrizable and we can define this map. Now consider the map. Consider the map. इसमें थोड़ा यही है कि मैप को बनाना, वरना सब कुछ ऑलरेडी, जैसे हमारा वो इससे पहले थ्योरम था ना, हमने वो लेमास किए, जिसमें पहले हम उसको सेटअप करते हैं, फिर लास्ट पे प्रूफ है उन सब कड़ियों को आपस में जोड़ना. तो लेट psi be a map from X to CBX star defined by where psi of X is equal to F sub X. और हमें पता है, let me write it. Now for each X belongs to X, F sub X जो है, it belongs to X double star, right? And it's a map from, it's a continuous map from X star to K, defined by
f sub x at f is equal to f of x for all f belonging to x star, और जिसको हम ऐसे भी लिखते थे कभी कि x double star at x star is equal to x star at x for all x star belonging to big X star यानी capital X star. तो वो तुम्हें पता है ये जो canonical embedding है, that is the map which sends x to fx, which is an isometry, linear isometry actually, an embedding actually. now वो यहाँ पे issue नहीं है. अब देखो ये जो fx है, fx is a continuous map on x star, so I can think of fx also as a continuous map to a smaller set bx star to k. So I can think of this fx restricted to bx star actually indeed belongs to the continuous maps on bx star, scalar valued continuous maps on bx star. So that's okay. Furthermore, you know, because I'm considering bx star in its weak star topology, fx is by definition weak star continuous because fx is weak star continuous. So that's मतलब क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं weak star topology ले रहा हूँ bx star पे, so that takes care of that. So fx is indeed a scalar valued continuous map on bx star when we consider bx star under weak star topology, right? क्योंकि ये तभी valid है जब हम इसकी weak star topology लेंगे. तो क्योंकि मुझे इसके साथ combine करना है, so it has to be consistent. Okay, so once I have defined this psi, now I define phi. मैं इसको compose करूंगा. देखो अभी मैं x से पहुंचा हूँ. Remember that I have gone from x to the continuous maps on bx star by sending x to f sub x. Okay, now define phi from c bx star to c delta, all continuous functions on this Cantor set, by phi of f sub x is equal to fx composition with rho. Now you have to remember that rho is a continuous function from which is onto continuous function from delta Cantor set to bx star. So as you can see, okay, so we compose it with fx. Now fx is a continuous, so I'm going from delta to bx star, from which I'm going via fx to k, yeah, real यहाँ पे field है, तो real numbers. So if I compose this, so this is rho, and then I have f sub x. If I compose them, it becomes f sub x composition rho. So it is a continuous map from delta to r. That means it belongs to C delta, right? Where fx belongs to bx star. Okay, anyways, so this is a well-defined map, no issue about that. And let, अब हम थोड़ा सा इसको further करेंगे. Then the composite map, अगर मैं further इसको compose करूँगा, तो मुझे इसके लिए कोई symbol नहीं, तो chi लिखते हैं. Chi from x to c delta be defined as, अब इस सारा कुछ combine करेंगे. यानी chi of x is equal to phi composition psi of x. Okay, so psi कैसे defined था? Psi of x was f of x, right? So it is actually phi composition f sub x. तो अगर मैं इन दोनों को combine करता हूँ, where do I land up? बिल्कुल अब x भी इसके साथ जुड़ गया, तो I've got another map आ गया. Psi of x, psi is a map. Psi, क्या मैं कह रहा हूँ? So I've composed fx with phi, और phi है मेरा ये map.
इसका नाम मैंने दिया है फी। सो अगर मैं इस क्या बोलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, अब मैं इवेलुएट करूंगा इस मैप को एट एक्स, राइट? तो इट वुड बी दिस, ठीक है। तो फी को हम कंपोज करेंगे, जो फी है which is a map from delta to r, okay, then चूंकि डेल्टा से हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मैंने ठीक लिखा, p of psi of x is prime. What is psi of x? Psi of x is f sub x. So in this way, देखो कहाँ पे हम थे, थोड़ा मिक्सअप हो गया, doesn't matter, वैसे ठीक ही है। I want to see where is chi. Now chi is a map, x से हम जाते हैं via psi of x to cbx star, और cbx star में ये अपना psi है, it is psi, और x को ले जा रहे हैं हम यहाँ पे, और इस पे यहाँ से हमारी c डेल्टा पे एक फंक्शन है, that's fine, that's our phi, ठीक है। So phi applied to c, मतलब phi of c of psi of x क्या है, ये भी है, दिस इज अ मैप फ्रॉम x to c डेल्टा, वो तो ठीक है, इसका नाम हमने दिया chi। ओके, वंस वी आर डन, तो उसमें इसके बाद कुछ खास है नहीं। देन जो ये psi है, ऑलमोस्ट हमारा हो गया काम। इस psi नहीं, इसको क्या बोलते हैं, chi, chi, psi यहाँ पे, chi is a linear map which you can easily check, मतलब chi of x1 तो यहाँ आएगा, psi of x की जगह f sub x1, f sub x2 वगैरह वगैरह, do it yourself। chi is a linear map such that norm of chi of x is equal to norm of phi of psi of x। तो हम दिखाना चाहते हैं ये एक आइसोमेट्री है, तो that is, should I write it like this? चलो देखते हैं, that is actually phi of f sub x, right? ये जो phi of phi composition fx है, okay, so this is a norm of a vector, so it should be f composition rho, just a minute, should be basically fx composition with rho, right? That is the definition, fx composition with rho, where rho is that map, बहुत सारे map है ना, rho is a map from delta to bx star, so this should be actually supremum of alpha belonging to delta mod of fx composition rho, just a minute, of alpha. That is the same thing as supremum of alpha belonging to delta, the Cantor set, that's the definition of our norm here. So this would be fx composition rho of alpha. अब जो ये rho of alpha है, it is a surjective map, so it implies that it runs over all of bx star. This is a surjective map, it runs over all of bx star, so this should be actually norm of f sub x, which we know is always equal to norm of x. अब ये वाला लास्ट वाला पोर्शन हम एक फंक्शनल इसमें करते हैं, जो fx का नॉर्म है ये norm of x के बराबर होगा, that's why जो canonical mapping है, that's a linear isometry, that's an embedding. So इसका मतलब क्या होगा, it implies that chi is a linear isometry
from x to c delta, लेकिन हमें ढूंढना है लीनियर आइसोमेट्री फ्रॉम x टू C01, लेकिन हम आधा अधूरा मतलब आधे रास्ते तो पहुंच ही गए क्योंकि डेल्टा इज अ सबसेट ऑफ 01, तो वही हम यूज करेंगे जो कि लास्ट टाइम हमने किया था. फाइनली each continuous map on this Cantor set delta can be extended to a continuous map on the whole interval, जैसा कि हमने इससे पहले किसी थ्योरम में किया था, इससे पहले वाले थ्योरम में continuous map on 01, but let me call it ऐसे मैं लिखता हूँ continuous map H इसका नाम रखते हैं और इसका मैप रखते हैं L. H can be extended to a continuous map L on the whole interval 01 by as follows. चलो लिखते हैं. Now you can write 01 as delta union delta complement, right? By delta complement I mean मतलब complement inside this interval. Okay, you can write it like this, where delta complement जो है it is a countable union, I think, of closed sets. Countable union of, हम इसमें रिमूव क्या करते हैं, ओपन इंटरवल्स है ना, ठीक, ओपन इंटरवल्स ही होंगे फिर जो ना C01 में 01 में हम जो रिमूव करते हैं वही होगा ना डेल्टा कॉम्प्लीमेंट टू कंस्ट्रक्ट द कैंटर सेट. So it is a continuous union of open intervals on each of which we define L linearly. इसको मैं रखूंगा ब्रैकेट में, नहीं linearly का मतलब पता है तुम्हें, in terms of line segments, such with so that L coincides with H on delta, with H on delta. So is that L coincides on delta, and consequently जो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, जो सुप नॉर्म है H का, it should be the same as sup norm of L. Now denoting eta from C delta to C01, यानी वायर में लिख देता हूँ, डेटा ऑफ हम सी डेल्टा में कौन सी मैप लिया था हमने, H goes to L, ठीक है. The desired isometry is, या required isometry, T from X to C01, X into C01, T from X into C01 is T of X is equal to eta composition chi of X. फिर हमने इसको नॉर्म को प्रिजर्व करते हुए C01 में भेज दिया. So because eta is norm preserving, तुम्हें याद है ना मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है क्योंकि हम रियल वैल्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे
कुछ कैंटर सेट है जिसपे एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड है। सो फंक्शन गोज लाइक दिस, फिर यहाँ पे अचानक से अपेयर होती है, मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन। इट इज नॉट लाइक दिस, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही ना रफली आइडिया देंगे। और यहाँ पे एक और टुकड़ा है जहाँ पे भी ये कुछ डेफिनेशन है इसकी। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इनको आपस में जोड़ दूंगा ये स्ट्रेट लाइन से, तो ये बन जाएगी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द होल इंटरवल 0 1, और इसका नॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इज द आइडिया, extending a continuous function from Cantor set to the whole of interval. But that's मतलब इसको देखना जरा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि कैंटर सेट का जो मेजर है वो 0 है, तो वो तो बिखरा हुआ है हर तरफ ना उसके टुकड़े, तो वो मतलब उसको हमें बड़ा वो इन्फिनिट मैग्निफिकेशन चाहिए कि अगर मैं उसका ऐसा कुछ बनाना चाहूँ तो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। बट दिस गिव्स यू एन आइडिया कि अगर हमारे पास सबसेट पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किसी सेट के, तो उसको हम पूरे सेट पे एक्सटेंड कर सकते हैं वाया दिस आइडिया बेसिकली, मतलब उसका नॉर्म चेंज नहीं होगा। सो देयर वुड बी अ कॉरेस्पॉन्डिंग कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल which has the same subnorm as the continuous function on that subset. और Cantor set is a subset of 0 1, वो तो हमें पता ही। Okay, so that finishes our result. अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही एक और फंडामेंटल थ्योरम की तरफ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रेप करना पड़ेगा, प्रिपरेशन। बेसिकली क्राइन-मिलमन थ्योरम हम करेंगे, which is about the extreme points of a convex set. Crine-Millman theorem. So you know what's a convex set. Let's start with, again here I will be considering X as a real normal space. ठीक है? अब real इसलिए कि जो convexity का idea है, that is primarily for the real normal linear spaces. Although it makes sense in the complex also, but मतलब जो भी इसके साथ properties related है या जो भी इसके साथ conclusions हैं, तो वो तो रियल नॉर्मल लीनियर स्पेसेस के लिए ही है। सो बट एवरी कॉम्प्लेक्स स्पेस इज अ रियल नॉर्मल स्पेस, सो obviously it extends, but we generally, it's a real theorem, it's about the field being, यहाँ पे field of a vector space real हो, where there it makes मतलब natural sense कि क्या मतलब है इसका। ओके, तो कॉन्वेक्स सेट तो हमें पता ही है, कॉन्वेक्स सेट ऑफ रियल से जैसे हम कहते हैं a subset C of a वेक्टर स्पेस, इसमें नॉर्म का भी कुछ नहीं डेफिनेशन में, और फिर लीनियर स्लैश वेक्टर स्पेस is said to be convex if alpha x plus 1 minus alpha times y also belongs to C whenever xy belongs to C. So we denote the convex hull of a set A is the smallest convex set containing A, and we denote it by, and it is denoted by CONVA. इसका मतलब है convex hull of A. Okay, so let us, जैसे कि R2 और R3 में हमें पता है convex set का एक सीधा साधा मतलब है, वो क्या? R3 as a vector space या R2
R2 काफी है हमारे सोचने के लिए, तो R2 ही लिखते हैं। R2 है अपना, it is R2, it's a vector space over the field of R numbers। और हमें पता है यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब ये आता है कि if 2 points lie inside a set and if then the line segment joining them also lies within that set, then that set is convex। मतलब this is equivalent to our definition of alpha x plus 1 minus alpha times y belongs to C whenever xy belongs to C। इसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्मुलेशन है कि अगर C में 2 पॉइंट्स बिलोंग करते हैं तो उनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो भी उसी को बिलोंग करेगा। नाउ वी कैन थिंक ऑफ 3 पॉइंट्स, तो मैं कहूंगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट। मेरे पास मान लो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है C। लेट A be equal to ABC। ठीक है, तो मैं कहूंगा ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको आपस में जोड़ दूं तो ऑब्वियसली इसमें 3 ही पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंट्स तो ए में बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन हाउ अबाउट जो मैंने कहा था CONV ऑफ ए, कॉन्वेक्स हल ऑफ ए, ने कौन सा है सबसे छोटा कॉन्वेक्स सेट जो ए को कंटेन करे। तो ऑफ कोर्स ये है एक कॉन्वेक्स सेट, अगर मैं ये डिस्प्ले दूं, इट्स अ कॉन्वेक्स सेट दैट कंटेन्स ऑल द 3 सेट्स। लेकिन अगर मैं लूं ट्राइंगल जो इन 3 पॉइंट्स को जोड़ने वाला है, स्ट्रेट लाइन से मैं जोड़ दूंगा, तो ये है, दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट, ये होगा स्मॉलेस्ट, कम से कम इतना तो इसमें होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 एलिमेंट्स वहां हैं तो उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट भी होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए, कम से कम ये 3 लाइन सेगमेंट्स तो होने ही चाहिए। और अगर ये 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे उस कॉन्वेक्स सेट में, तो इसको जोड़ने वाला पॉइंट भी उसी में होना चाहिए, क्योंकि इट हैज टू बी कॉन्वेक्स। तो इसको और इसको जोड़ने वाला पॉइंट भी, यानी ये सारे लाइन सेगमेंट्स भी उसी में होने चाहिए। यानी ये जो मैं डार्कन कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ये है कॉन्वेक्स हल ऑफ ए, यानी जो ट्रायंगल है। इसी तरह से कोई भी पॉलीगन तुम अगर बनाओगे, कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स लोगे, उनको जोड़ने वाला जो पॉलीगन है वो होगा स्मॉलेस्ट कॉन्वेक्स सेट विच कंटेन्स दैट सेट, और उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स हल ऑफ ए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है, what we call extreme subsets of a convex set, extreme subsets of a convex set। तो अगर मैं, अच्छा, और ऑफ कोर्स अगर सेट खुद कॉन्वेक्स है तो उसका कॉन्वेक्स हल भी वो खुद ही है। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं इसका कॉन्वेक्स हल कौन है इस ट्रायंगल का, तो ये खुद ही है, बिकॉज सेट इज कॉन्वेक्स। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं इसका कॉन्वेक्स सेट कौन सा है, तो तुम कहोगे नहीं ये तो इसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मैं रफली बता रहा हूँ, तो इसके कॉन्वेक्स हल में ये रीजन भी आना ही चाहिए, दिस वुड बी इट्स कॉन्वेक्स हल, ये पूरे का पूरा पोर्शन। तो अगर सेट कॉन्वेक्स है तो उसका कॉन्वेक्स हल वही होगा, और we might have to add so a set other points to make it convex। So then it is very तो ये मैं तुम्हें एक होम असाइनमेंट देता हूँ। चलो, तो अगर मैं तुम्हारे पास कोई फाइनाइट सेट है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास फाइनाइट सेट है, चलो डिफाइन करते हैं पहले, द सेट ऑफ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशंस of a finite number of a set of points of let me call them finite set of points x1, x2 up to xn is the set all x's belonging to x such that x is equal to mu I xi runs from 1 to n, mu i's are negative, not positive, and summation mu I is equal to 1, I runs from 1 to n. So this is basically the convex hull of this finite set।
ठीक है ना। तो तुम इसको मतलब शो दैट दिस इज अ कॉन्वेक्स सेट, क्या तुम दिखा सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड है वैसे, कॉन्वेक्स, इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। बट मतलब प्रूव करने से ज्यादा इसको इमेजिन करो कि हम कर क्या रहे हैं। जो मैंने बता दिया कि अगर ये है तो फिर इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट होगा। इसी तरह अगर तुम्हारे पास फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है तो उसको अगर तुम इस तरह से उसका कॉन्वेक्स हल बनाओगे, वो इस एक्चुअली ये वाला सेट है। एनीवे, then there is what we call a convex cone. Let me call it cone. Convex cone basically have all non-negative scalar multiples of a set of vectors. तो अगर मैं लेता हूँ all, मतलब उसको जब scale up करो, you've got a set of vectors, just scale them up by positive numbers. मेरे पास यहाँ एक वेक्टर था, यहाँ एक वेक्टर है, मैंने इसको all possible scalar values में लिया और यहाँ पर भी लिया, ठीक है ना। और तो स्केल मतलब इसको स्केल अप कर दो, तो उसका स्केलिंग अप से क्या होता है, अगर ओरिजिनल सेट कॉन्वेक्स है जिसको मैं स्केल अप कर रहा हूँ, मतलब इन वन डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देन दैट वुड आल्सो बी अ कॉन्वेक्स सेट। अगर तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स सेट हो ऐसे ऐसे, मतलब मैंने गलत बना दिया, अब सभी वेक्टर्स को तुम अगर तुम स्केल अप करोगे थ्रू पॉजिटिव मतलब नंबर, मतलब इस तरह से जो भी हमारी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, सो ये जो इसका कॉन्वेक्स कोन बनेगा, ऑल पॉसिबल वेक्टर्स को हम पॉजिटिव स्केलिंग करेंगे, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, बट इन द इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, जहाँ पे मतलब जो हमारी चोजन डायरेक्शन होगी एज पर आवर एक्सिस, राइट। तो जीरो से हम आगे जाएंगे तो मतलब अगर सपोज ये वेक्टर यहाँ पे है तो इसकी पॉजिटिव स्केलिंग या तो यहाँ पे कोई वेक्टर आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब इस लाइन पे, so that would also be a convex set. Now I wanted to come to the extreme subset of a convex set, actually extreme points of a convex set. अब इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे हमने अभी पॉलीगन दिया, पॉलीगन जो है R2 में, इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट। लेकिन अब जो है ना ये वाले सेट्स जो ना इसका साइड है, या अगर 3 डायमेंशनल में कहूँ फेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन, अगर वो होगा तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम सबसेट ऑफ दिस कॉन्वेक्स सेट। एक्सट्रीम सबसेट का मतलब ये है कि ये जो ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इस लाइन पे, इस लाइन सेगमेंट पे, अगर मैं पॉलीगन की बात करूं, दे कैन नॉट बी रिटन एज अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स आउटसाइड ऑफ दिस सेट। जैसे ये पॉइंट है कॉन्वेक्स सेट, है ना, या मान लो ये लाइन सेगमेंट अगर इनसाइड है, तो दिस पॉइंट यहाँ पे इज लाइज बिटवीन these 2 points, so it is a convex combination of, whether it could be midpoint of these 2 points say, so then this is a convex combination, or it lies